Hello students, how are you all? I hope you all are fine and are good in health. Today I'm going to teach you a topic of C++ object oriented programming language on introduction of OOP and its basic concepts. Let's start. First of all, you all can see the diagram which shown the concepts of object oriented programming. You can see object, abstraction, inheritance, encapsulation, polymorphism, and class. These all are concepts of OOPS. First of all, we all will read about what is OOPS. We can say also to OOPS object oriented programming. OOPS refers to languages that use objects in programming. Object oriented programming aims to implement real world entities like inheritance, hiding, polymorphism, etc. in programming. The main aim of OOP is to bind together the data and the functions that operate on them so that no other part of the code can access that data except the functions. मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करती है और इसका जो मेन एम होता है कि सिर्फ रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को यूज़ करना इनहेरिटेंस हाइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस ओप्स इन सभी के अलग अलग काम होते हैं ठीक है इनहेरिटेंस का एक अलग वर्क है हाइडिंग का अलग वर्क है जिसको हम इनकैप्सुलेशन भी बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का एक अलग काम होता है ठीक है प्रोग्रामिंग में और इसमें क्या होता है ये सारा जो डाटा है उसको साथ में बाइंड कर कर रखती है एंड नेक्स्ट वन इज क्लास सो व्हाट इज क्लास A class is user-defined data type. Remember it? A class is a user-defined data type. It consists of data members and data functions, which can be accessed and used by creating an instance of that class. It represents the set of properties or methods that are common to all objects of one type. A class is like a blueprint for an object. तो जो क्लास होती है वो यूज़र द्वारा ही डिफ़ाइन की जाती है इसमें मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस होते हैं जो कि विच कैन बी असेस्ड एंड यूज्ड बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास and represent set of properties or methods that are common to all objects one type. For example, consider the class of cars. There are maybe many cars with different names and brands, but all of them will share some common properties like all of them will have 4 wheels, speed limit, mileage, range, etc. So here, car is the class. Did you understand? Car is the class and wheels, speed, time, mileage, their properties. तो उन्होंने प्रॉपर एग्जाम्पल में आप देख सकते हो बताया है कि सबसे पहले यूज़र द्वारा एक कार्स नाम की जो है क्लास डिफ़ाइन की ठीक है उसमें हो सकता है कि बहुत सारी कार्स हों उनके अलग अलग नाम हों अलग अलग ब्रांड्स हों ठीक है सम कॉमन प्रॉपर्टीज़ उनमें कुछ सेम प्रॉपर्टीज़ भी हैं लाइक कौन कौन सी जैसे कि कार के 4 पहिए होते हैं अभी 2 टायर्स वाली कार तो हमने कभी सुनी नहीं होगी है ना 4 व्हील्स जैसे उसकी स्पीड लिमिट माइलेज सो हेयर कार इज़ द क्लास ठीक है ना नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट्स
What is the object? It is a basic unit of object-oriented programming and represents the real life entities and represents the real life entities. An object is an instance of a class. An object has an identity, state, and behavior. Each object contains data and code to manipulate the data. Objects can interact without having to know details of each other's data or code. You can see the diagram. First of all, the shown identity. What we have identity? The name of dog. Secondly, state and attribute. It is a breed, age and color. Third one is behaviors. Bark, sleep and eat. सबसे पहले हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी है वो कौन सी है? डॉग. ठीक है. देन उसका स्टेट एंड एट्रीब्यूट क्या है उसमें कि वो कौन सी ब्रीड का है, क्या एज है उसका, क्या कलर है. थर्ड वन इज बिहेवियर. तो उसका बिहेवियर क्या है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है? बार्क, स्लीप और ईट. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज अब्स्ट्रैक्शन इन C++. Abstraction. As you all know the meaning of abstraction. The data abstraction is one of the most essential and important feature of object-oriented programming. Data